यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात यत करोषि, यत जो, करोषि करते हो, यदश्नासि जो खाते हो, यद जुहोषि ददासि यत जो हवन करते हो और जो दान देते हो, यद तपस्यसि जो तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत्कुरुष्व मदर्पणम उसे मुझे ही अर्पित करके करो। This verse is the 27th verse of the 9th chapter of the Srimad Bhagavad Gita. In this verse, Shri Krishna tells while addressing Arjun, O Arjun, whatever work you do, the food you eat, the havan you perform, the charity you give, the penance you perform, offer it all to me. This complete self-giving, the surrender with love, is the basis of Gita. In this verse, Shri Krishna tells that even the smallest work should be offered to me as yajna. By doing this, human beings repeatedly contact the God element which is present within them and start experiencing and sensing the presence of that God element. We have created a room in our consciousness. The divine manifests his will and come forward and work through our instrumentality. Then we become nimitta matram. We become the feather blown by the breath of the Lord. We become the flute by whom divine plays his tune incessantly. So, we should offer everything to the divine. In this spiritual retreat, we are trying to do that only, like doing everything with consciousness, eating with consciousness, shower with consciousness, playing with consciousness, sleeping with consciousness, and everything we are doing, we are trying to do that with consciousness. Consciousness means offering that task to the divine and invite him to do that work through us. If we go deeper in this verse, then we can understand that Sri Krishna tells that you should offer the most valuable and precious thing to the people or the associations which leads you towards truth, with the help of which you get to know who you are and what is the aim of your life. So for us,
the most precious thing is our time. So we should offer that time to the associations like spiritual retreat or the Gita classes which held in our school, where we get to know who we are and what is the aim of our life. So whatever we are doing, we should keep offering that thing to the divine. We should first remember the God. We should remember that divine and then offer that task to the divine and invite him to do that work through us. Can we offer only what work we are doing? Or should we offer also the emotions that we are feeling? Let us give examples of it. Last evening, there was a child who was very hurt about something. And he was crying incessantly and quietly, silently, sitting away, not talking about the pain. And he was pained. And all I just asked him, I said, have you offered? He said, no. And that moment he offered, it took him barely 30 seconds. He was smiling and he joined the Antakshari. This is the magic that God does. Because, see, Ishavasya Upanishad, who will speak out the first verse of Isha Upanishad? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, मतलब ये जो पूरा जगत है वो ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हम लोग जो भी करें, जो भी हम लोग भुंजीथा भोग करते हैं, मतलब जो भी हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो त्यक्तेन मतलब त्याग पूर्वक, उन्हें ऑफर करके, उन्हें अर्पित करते हुए करें। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी और के धन पर या किसी और चीज पर हम लोग उसका लालच ना करें। हाँ, बट तेन त्यक्तेन यू लेफ्ट वन वर्ड, भुंजीथा। भुंजीथा मतलब जो भी हम लोग भोग करें, ग्रहण करें। हाँ, तो जो भी हम त्याग करें, हम उसको एंजॉय करें। Our Indian spirituality never tells us to run away from enjoyment. When we talk of the four gods who are like sentinels for Surya, that we have to first become those four gods, then we'll be able to enter into Surya Savitri. Who are those four gods? Varuna, vastness, we have to become vast. Varuna, Mitra, friendliness. Ariman, and hard work. And Bhaga. Bhaga, enjoy. So, we can enjoy, but only after offering. Now we are talking about what should we offer. First, Isha Vasya Midagvam Sarvam. It means that everything here belongs to the Lord. वो खाली उसमें व्याप्त नहीं है. Who does it belong to? Who does this earth belong to? And who does Ruchi and Pranali and all of us, who do we belong to? तो अगर हमको दुख हो रहा है तो who does that दुख belong to? It's not mine. If I am pained by something, it doesn't belong to me. Why should I suffer this pain? All I have to do is remember, offer and invite him into the pain. ये पेन मेरा तो है नहीं, ये मेरे को फीलिंग हो रही है इस पेन की, बट आई एम स्टार्टिंग टू फील कि मेरा पेन है और हम उसके लिए रो रहे हैं, बट ये मेरा पेन तो है ही नहीं, ये तो आपका है, तो पेन उनको दीजिए। सब कुछ देना होगा ना, हर इमोशन को देना होगा, खाली कर्म नहीं, इमोशंस। एक आइडिया आया, हमको वहाँ एडमिशन मिलना चाहिए कॉलेज में। अब ये थॉट जो है मेरा तो नहीं होना चाहिए ना। अर्जुन का क्या प्रॉब्लम था इन द गीता? मैं लड़ूंगा तो मैं पाप करूंगा। द होल आइडिया वाज रॉन्ग। वो जो तू करेगा वो किसकी एनर्जी से करेगा, कौन मारेगा? तो ये आइडिया उसका रॉन्ग था, ये समझाने के लिए पूरी गीता बतानी पड़ी, राइट? तो इस एक वर्ड से ये सारी बातें समझनी चाहिए, फ्रॉम द मोस्ट मंडेन to the most important thing that we are doing, from the most mundane thought that comes to my mind to the most important thought that comes to the mind. जैसे कोई एक आइडिया आता है, give it importance. Then maybe it works, maybe it doesn't work, but give it importance because it has come from somewhere,
right? And similarly for pain, all the emotions, love, hate, grief, jealousy, jealousy की फीलिंग हो रही है, वो फर्स्ट आ गया, उसका नाम अखबार में आया, मेरा तो नहीं आया. अब what is this emotion? It's an emotion of competition. अब ये किसका है emotion? Who does it belong to? Divine. Who does it belong to? Yeah. But to be conscious is important कि I am feeling jealous. जब तक ये कॉन्शियस नहीं आएगी तब तक तो हम उसको ऑफर ही नहीं करेंगे. बट ये कॉन्शियसनेस आ गई अगर, तो इमीडिएटली उसको ऑफर करना है. एंड विद इन मोमेंट्स समटाइम्स ही टेक्स केयर ऑफ इट. शिवाय, वुड यू लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट इवनिंग? नो नेम्स, नो, ओनली द पेन. Ma'am, actually, I would not like to go in detail because I also had the fault. I should not do the thing through which this all matter was caused. So, in my opinion, when I was blaming the other person yesterday, and today I am saying that it was all my fault through which it happened. Yeah. But then when you offered, you Ma'am, cried before that. yes. And really cried. And then what did you do? Ma'am, I offered my sadness to the divine, to my innermost person, and then I was quite normal. It felt good. In how long? In approx 10 seconds. And then you were dancing and laughing. And that offering brought you to the realization today that it was your mistake, not someone else's mistake. See, that one little offering could make such a big change in your consciousness, and you've grown so much in that, right? This is what happens when we offer to God, right? Even when we are making a mistake, we are thinking someone else has made it and we are crying away, and we offer it. And then we realize, maybe it takes a day, but then we realize, nahi, galti to meri thi, right? This is all I had to say. But if somebody else would like to give some experiences or talk about this mantra. Ma'am, so when I was studying the shlok in the first term, Vinod sir gave an example like, for example, we have two cars, but at one point, देखिए हम गलती क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को अपना मान लेते हैं. हमें वो हमेशा ईश्वर की माननी चाहिए. तो हम गलती क्या करते हैं कि मेरे पास दो कार है, हम अभी एक ही कार इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय वो हमारी है. अब आप ये एग्जांपल ले लीजिए, जब मेरे पास वो कार नहीं है, मैंने उसको बेच दी, तो वो किसी और की हो गई, लेकिन वो ईश्वर की रहेगी. तो एक चीज़ जो चेंज नहीं होती है ये है कि वो ईश्वर की रहेगी. अब अगर मैंने उसको बेची भी नहीं, कभी ना कभी वो किसी के पास तो जाएगी. तो जो चीज़ हमारे पास जब है उसको एंजॉय करना सीखना चाहिए. हमें ये नहीं लेना चाहिए कि हाँ मेरे पास सिर्फ दो कार हैं, उसके पास तीन है, मुझे तीन चाहिए, ऐसे कर करके जो हम लोग ये सोचते रहते हैं, जो ग्रीडीनेस हमारे अंदर है उसको ख़त्म करना चाहिए. ये मैंने सीखा इस मंत्र से. बहुत सुंदर. एक और बात मेरे को अभी याद आई बोलने के लिए, शेयर करने के लिए, कि जो एक बैंक मैनेजर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मैनेजर, अब उनके बैंक में तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए रखे होंगे. तो इज द बैंक मैनेजर वेरी रिच? हाँ, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज मैनेजिंग द वेल्थ ऑफ समवन एल्स. तो अगर हमारे पास कुछ रुपए हैं, कुछ है, तो वो हमारा नहीं है. हमको भगवान ने उसको मैनेज करने के लिए ये पोस्ट दे दी कि कुछ दिन तुम्हारी बैंक में रखा है. अब तुम उसको कैसे यूज करते हो, दैट यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन, राइट? बट वो है नहीं हमारा. उसका कोई अभिमान होना महा बेवकूफी है, राइट? समझ आया? This morning, I tried the offering to the divine, like something was going on in my head. I was late to work and I only had 15 minutes to reach. And I booked my cab, and I could see that only the cab driver is going to take only 2 minutes to reach me, and it takes 7 minutes for me to reach school. So that is like 9 minutes, and I had 6 more minutes in hand where I can just come in and take my attendance. And in few seconds, I saw that the driver is taking a longer route to come to my place. And it is not always about the competition. It is always about it. Sometimes it's about that we think that we know more,
and the other person is not, and we get irritated. And at that very moment, I closed my eyes, and it was really hot outside. I was sweating, and I was waiting for the cab driver. And I offered it to the God that please give me some kindness so that I'll not get irritated. And when he came, I very gently asked him that why did you take the longer route? And he told me that, ma'am, sometimes the map is not working properly. And when I offered it to the God and I told him that please give me kindness so that I'll be nice to him and I'll reach my work on time. So it really, really helped, to be very honest. And yeah, I made it on time. I was listening to the whole discussion, which is about offering. Now, what can be the perfect form of offering? There is a conclusive verse in Gita in chapter 8. Ananyash chintayanti yojana mam paryupasate. Ananyash chintayanti yojana mam paryupasate tesham nityabhiyuktanam. This is important. Tesham nityabhiyuktanam योगक्षेमम वहाम्यहम. जब हम किसी प्रॉब्लम में हो, कोई अनरेस्ट है, कोई ऑब्स्टिकल है, तब हम रिमेंबर करें और ऑफर करें. बहुत अच्छी बात है. बट श्री अरविंद in every sphere of life talks about what? He talks about perfection. So for perfect perfection of remember and offer is ananyas chintayanti yojana mam paryupasate tesham nityabhiyuktanam. नित्याभियुक्तानाम, मैं नित्य युक्त हूँ. क्या करता हूँ? योगक्षेमम वहाम्यहम. मैं उनका योग भी देखता हूँ और उनका क्षेम भी देखता हूँ. मोमेंट बाय मोमेंट we have to remember him. Not only when we are in crisis. This is a practice which all of us has to make. Thank you. योग और क्षेम का भी मीनिंग समझा दीजिए. Yoga is related to our spiritual accomplishment. You can say the actualization of the true self. And shame, whatever we need in the material world as sadhan. योग हमारा साध्य है और क्षेम हमारा साधन है. तो वो कहते हैं मैं आपके साध्य के लिए जो साधन आपको चाहिए, जब कैब चाहिए तो कैब मिलेगी, जब खुशी चाहिए खुशी मिलेगी, जब जो कुछ भी चाहिए, जब कोई टेक्स्ट बुक खो गई है तो वो भी आपके हाथ में आ जाएगी. किसी आपको हायर रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस में उन्हें ले जाना है तो कोई उस तरह की बुक ला के आपके हाथ में दे देगा. तो वो योग क्षेम सब कुछ आपका देखते हैं. बस उसके लिए द 3 C's याद रखना है. कौन सी 3 C's हैं? Constantly, Constant, continuously, continuous, consciously. constant, Continuous and consciousness. consciousness. We have to be conscious at every moment. That is why we are called the school of Conscious transformation. yes. अब हमारे 2 स्पीकर्स हैं. आप लोग को कुछ बोलना है? हाँ प्लीज. Ma'am, in the morning, while I was walking in the field, so while walking, मेरे पैर थोड़ा सा दर्द हो रहा था, मतलब ग्राउंड के ऊपर चलने से, और धूप का भी मज़ा लेना था. जैसे दीदी और भैया ने कहा था कि हाँ, जैसे ही धूप आ रही है उसका जो फील, उसको एक्सपीरियंस करना था. तो मैं चल तो रही थी, पर जो दर्द हो रहा था, तो मैं चल रही थी, सोच रही थी कि हाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, पर मुझे जो एक्सपीरियंस करना है, जो मुझे करना है, वो मैं कर रही थी कि हाँ आगे बढ़ना है. पर जब बाद में मुझे शायद दीदी ने बताया कि तुम्हें एक्सपीरियंस क्या हुआ, तो जो हुआ तो मैंने बताया. तो
उन्होंने कहा कि अगर पैर में दर्द हो रहा है और तुम उसको इग्नोर करके तुम कह रही हो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर मतलब कि आगे बढ़ रही हो कि आगे की जो भी मतलब हमको एक्सपीरियंस करना है और जो पेन हो रहा है उसको इग्नोर करो, नहीं ये सही नहीं है, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पर नहीं, उन्होंने अच्छे से बहुत अच्छे से समझाया मुझे कि पेन है और लक्ष्य है, पर इसमें से दोनों अब समझना है तुम्हें इसमें कि जो पेन हो रहा है और धूप के एक्सपीरियंस, अब तुम्हें पेन में भी लेग में तुम्हें एक्सपीरियंस करना है कि जो किरणें हैं वो कैसे पैर में आ रही हैं, उसको एक्सपीरियंस करो, उसको महसूस करो, उसको समझो वो क्या कहना चाह रही है। तो दूसरी बार जब मैंने शाइली दीदी के साथ ये कॉन्शियसनेस के साथ जो वॉक की थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था जब मतलब कहा कि पेन है और सब ऑफ़र कर दिया कि अब बस वही है। तो किरणें और ये सब पूरा बहुत अच्छा लगा और दैट इज़ नॉट एक्सप्रेसिबल, सो आई कांट, सो आई से दिस। May I request Vinod ji to tell us about offering? Day before, she cited a practical example from her house. So, if ma'am, you could share that. We were just discussing, myself and ma'am, how we should eat. There is definitely a science of eating. I take the example of my father. Right from beginning, whenever I used to offer him food, he used to close his eyes, sit silently with a still body, with a smile on his face. We never understood what is he doing. And it used to take some 15 minutes or so. So one day, because of our curiosity, he explained. What does he do? He says, when something comes before me, I take my mind very deep inside, deep into the core of myself, a space from where prayer arises. So he says, पहले मैं किसान के बारे में सोचता हूँ, किसान ने कितना खून पसीना बहाया, कितनी मेहनत की, उसके पास कितने कम रिसोर्सेज हैं, उसने खेत बोया, फिर धरती माँ ने अपना सीना फाड़ के उसमें से एक अंकुर निकला, एक पौधा निकला, फिर उसमें फल हुआ, ये प्रोसेस हुआ, उसकी सिंचाई हुई, गुड़ाई हुई, हार्वेस्टिंग हुई, फिर वो किसी तरह तैयार होके ड्रेस अप होके शॉप में आया, फिर वो शॉप से खरीद के घर में आया, हमारी किचन में आया, फिर उसके बाद उसकी कितनी सफाई हुई और उसको कैसे प्यार से बनाया गया, ये सोचते हुए कि जो लोग इसको खाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे, आनंद आएगा उनके जीवन में। उन सब को प्रणाम करते हुए और एक इनर वेरी डीप इनसाइड एक ग्रैटिट्यूड, ये सब करने में उनको 15 मिनट लगता। तो जब हम लोग बहुत छोटे थे तो समझ में नहीं आया कि इतना करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बताया ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या हैं, कृतज्ञ हैं। फिर धीरे धीरे हमारी जो पूरी कॉन्शियसनेस है वो हमारी लोअर मूवमेंट्स में चली जाती हैं, जो 3 लोअर मूवमेंट्स
शेयर मैंने हमें समझाए हैं, द फिजिकल, वाइटल एंड द mental. And every day, every moment rather, we have to elevate from the lower hemisphere to the higher. So this is psychic eating and expressing gratitude to the whole surroundings and people who help you. Thank you. Ma'am, on 6th May, the ICSE and ISC results were announced. I got my marks. On seeing a specific subject marks, I was very happy. But on seeing a overall marks, I was very disappointed. But I came to school, met all my teachers, and I was very upset. But while leaving back from the school, while reaching my home, I just remembered actually your talk that you did the last summer retreat. I was reminded by your talk. I took just 30 seconds. Sitting in the car, I offered it to the God that whatever marks I'm getting, it's all yours. Whatever I have written in my paper is all yours. Whatever I will do further, whatever I'll take further in my studies, that's all yours. Nothing is mine. So that offering made me very happy. And the next moment, I just had a conversation with my parents that, okay, I'm ready to do this. I'll do that. It was excellent. So my result was made, the result day was made a very great day by offering to it. The magic of offering, it just doesn't stop. Each one of us must be having so many stories to tell. Now let's end this session with 2 minutes of silence.